कि हमारे अध्यक्ष जी ने आपको बताया कि आज़ादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर आज़ादी के अमृत महोत्सव के थीम को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय पुस्तक न्यास 2 वर्षों के अंतराल के बाद नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले का आयोजन फिजिकल एडिशन के तौर पर आपके बीच लेकर आ रहा है। और इसके कुछ फीचर्स अभी आपके सामने बताए गए हैं। के तौर पर फ्रांस हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर कंट्री है। इसी प्रकार से गत वर्ष हिंदुस्तान हमारे देश ने पेरिस बुक फेस्टिवल में गेस्ट ऑफ ऑनर डेलीगेशन के रूप में हिस्सा लिया था। साथ ही साथ इस पूरे आयोजन में कुछ विशेष बातें हैं, जैसे कि 2 साल के बाद जो हो भी रहा है इसका विस्तार, जैसे कि आखिरी बार हम आपसे मिले थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये बात की थी कि इसको और बड़ा किया जाएगा, तो पिछली बार से उसका स्तर लगभग 2 गुना होने जा रहा है। साथ ही साथ ये नए पवेलियन जो हमारे बने हैं प्रगति मैदान में, जिन जो उस वक्त तैयार होने थे वो तैयार हो चुके हैं। सो नया स्वरूप के साथ, नए वेन्यू पर, नई सुविधाओं के साथ इस पुस्तक महोत्सव को आयोजित किया जाएगा। साथ ही साथ आपको थीम पवेलियन, इसमें आज़ादी का अमृत महोत्सव को लेकर आपको एक अच्छी शानदार एग्जीबिशन देखने को मिलेगी। G20 का एक अच्छा आपको इंटीग्रेशन मिलेगा। साथ ही साथ फ्रेंच पवेलियन बहुत शानदार तरीके से हमारे सहयोगी देश ने, उनकी एम्बेसी ने, उनके डायरेक्टर कल्चर सेंटर ने एक बड़े शानदार पवेलियन को ऑर्गेनाइज किया है, जहाँ पर आपको फ्रांस का अच्छा फील देखने को मिलेगा। साथ ही साथ चिल्ड्रन पवेलियन होगा, लैंग्वेज पवेलियन होगा, ऑथर्स कॉर्नर्स होंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को समर्पित एक अलग से पवेलियन तैयार किया गया है, जिसमें आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति से जुड़े हुए विषयों पर उसके सभी स्टेक होल्डर्स के द्वारा किए गए काम को देखने को, समझने को मिलेगा। क्योंकि किताबों की दुनिया है तो उसको संस्कृति से जोड़ने के लिए एक एम्फी थिएटर की व्यवस्था की गई है, यहाँ पर बुक और लिटरेचर और कल्चर से जुड़े हुए एलिमेंट को भी प्रदर्शित किया जाएगा। इन सभी विधाओं से जुड़ते हुए, इन सभी इश्यूज को आपके सामने लाते हुए कुछ और विशेष बातें हैं, जैसे गत वर्ष पीएम युवा योजना या अपकमिंग वर्सेटाइल ऑथर योजना भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई थी। इसको एनबीटी ने इम्प्लीमेंट किया। वो हमारे युवा लेखक, उनका एक ओरिएंटेशन कैंप है, उसको भी इसी दौरान देखने को मिलेगा और उनके द्वारा लिखी गई किताबें जो हमने उनको प्रकाशित करने जा रहे हैं उनको भी अनावरण किया जाएगा, क्योंकि एक विशेष अवसर है जब हमारा बुक फेयर 50 साल पूरे कर चुका है, तो एक बड़ा स्वर्णिम समय है। उसको यादगार बनाने के लिए हम लोग एनबीटी स्टैम्प भी लेकर आ रहे हैं, जो पुस्तक महोत्सव की, पुस्तक मेले की 50वीं वर्षगांठ को समर्पित होगा। और कहीं न कहीं उसमें आज़ादी का अमृत महोत्सव और G20 जैसे झलक भी दिखाई देगी। इसके अतिरिक्त जैसे चिल्ड्रन पवेलियन है, बच्चों को अलग अलग गतिविधियों से जोड़ने के लिए सिर्फ किताबों तक ही वो सीमित न रहे, किताबों से जुड़कर वो अपने टैलेंट को कैसे देखें, उसके अलग अलग कॉम्पिटिशन्स आयोजित किए गए हैं, अलग अलग गतिविधियाँ की गई हैं। उसमें लगातार बच्चों की गतिविधियाँ पूरे 9 दिन तक जारी रहेगी। एक नई शुरुआत हम नए स्वरूप में लेकर आ रहे हैं, जिसको पूरे तरीके से ऑनलाइन कर दिया गया है, न्यू दिल्ली राइट्स टेबल। अगर आपकी किताब वैश्विक स्तर पर नहीं जाती है तो कहीं न कहीं पुस्तक संस्कृति को बढ़ावा नहीं मिलता है। इस चीज़ को बढ़ावा देते हुए इस बार ऑटोमेटेड तरीके से 80 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स के द्वारा, लगभग 30 से ज़्यादा देशों के द्वारा राइट्स टेबल का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 350 से ज़्यादा राउंड की मीटिंग्स हैं और ये पूरा ऑटोमेटेड मेथड से किया गया है, जिसमें हम लोगों का रोल सिर्फ फैसिलिटेशन का रह गया है। तो पब्लिशर, राइटर और ऑथर एक दूसरे से निसंकोच अपने कंटेंट को लेकर मिल सकते हैं। ये एक नई व्यवस्था हम लोग इस बार शुरू करने जा रहे हैं, इसकी भी एक पूरी व्यवस्था की गई है, जिसका आपको अवगत करने को मिलेगा। साथ ही साथ क्योंकि फ्रांस से एक बहुत बड़ा डेलीगेशन, जिसमें नोबेल लॉरेट ऑथर्स की हैं, बड़ी टीम है लेखकों की, प्रकाशकों की और वहाँ के वरिष्ठ लोग हैं किताबों की दुनिया से जुड़े हुए, वो हमारे बीच आने वाले हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए हर वर्ष की तरह CEO स्पीक, हमारे जो पब्लिशिंग इंडस्ट्री के CEOs हैं और हमारे काउंटर कंट्रीज के CEOs हैं, और विशेष रूप से G20 नेशंस के जो रिफ्लेक्शन है उनके लोगों को बुलाकर एक CEO समिट को भी आयोजित किया जाएगा, जिसको 26 तारीख को किया जाएगा। और इससे दोनों देशों के बीच और वैश्विक स्तर पर ज्ञान, प्रसार और पुस्तक संस्कृति को निश्चित रूप से बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा जो बाकी चीज़ें हैं वो बारीकी से हैं। आपको लैंग्वेज का और सभी भाषाओं में कंटेंट भी देखने को मिलेगा। For people who are English, I just quickly sum it up. New Delhi World Book Fair is scheduled for 25th. It will be inaugurated on 25th at 2:30 p.m. by Honorable Minister of Education, Union of India. France is my guest country.
We are hosting him in reciprocal arrangement with Prime Minister President Joint Accord of 2018. We are going to have a theme pavilion, children pavilion, G20 pavilion, French pavilion, international pavilion, language pavilion, NEP pavilion, and also an amphitheater where we will showcase various cultural activities. It's glad to see that when we are celebrating Azadi Ka Amrit Mahotsav and India is celebrating hosting as G20 presidency, we are going to have this grand mega event in new convention center. So that will be a new reflection and a new feel as committed in the last press conference in 2020. Glad to see that after 2 years of gap, we are having a physical edition. We are really excited and looking forward and to take our mandate forward. This event has been scaled up almost double of the scale with more than 2,000 stores and more than 1,000 different stakeholders from different countries, nationally and internationally. Now, without taking much of time, I'll be happy if my counterpart, Sir Emmanuel, who is from the Embassy of France, the director out there, will give a small brief about French participation and key aspects about their delegation. Good afternoon, bonjour. First of all, I would like to say, Mr. Chairman, Mr. Director, dear guests, how happy we are, we French, to be the guest of honor of this New Delhi World Book Fair. As it was recalled, this is the result of a decision by Prime Minister Modi and President Macron during the historic visit of President Macron in 2018. And India was the guest of honor of the Paris Book Fair last year. And now we are very proud and very happy to come as guest of honor in New Delhi. Just a few words about what happened in Paris. The Paris Book Fair took place close right at the bottom of the Eiffel Tower. We had an amazing delegation coming from India. I still have fond memories of your Indian pavilion. It was a great moment for literature, and today we see that French people are more and more interested in Indian literature, and that is also a result of that invitation. France and India are really two big countries of literature. In each country we have many readers, publishers, bookstores. Just to mention a few figures, France is a 65 million inhabitant country, and we have 10,000 publishers. We have 25,000 bookstores, and every year we have 70,000 new titles. So that means that if you divide the number of French citizens by the number of titles, one French out of 1,000 publishes a book every year. So we are really, as India, a very big country of literature. And President Macron, 2 years ago, in 2021, declared that reading was a great national cause. And so a lot of energy has been put since 2021 to encourage people to write, to read with special programs in schools, universities, libraries, bookstores, everywhere. We are also a country with many book fairs, not as many as in India. I've been here for 3 years and I am really amazed by the size of the interest of the book fairs, but we have many book fairs in France as well. We value this format. So a few words about the delegation. We have dozens of people arriving from France today and tomorrow. A few words about our writers first. The delegation of authors is led by Annie Ernaux, who is our latest Nobel Prize. I don't know if you know, but with the 16 laureates, France is the country which received the largest number of literature Nobel Prizes in the world. One of them was Romain Rolland, who played a very big part in the cultural relationship between France and India. Annie Ernaux is the last one. Is the first French woman Nobel Prize of Literature. It was high time this happened. And we're very happy she's coming to India. It is her first trip to India. You know, she's 82 years old, and after she received the Nobel Prize, she said, I won't be able to go to many countries. And she decided to go to 2 countries only as Nobel Prize winner,
and India is one of the two. Perhaps you've read her work. Her literature turned her into a prominent French feminist figure. All her books are translated into English, and all her books are widely available in all major bookstores in New Delhi and in India. As I said, we have 16 authors coming. She's the Nobel Prize, but I can assure you that the 15 authors are stars as well, and they're very, very well known in France. Camille Laurence, for example, is someone who's always in the news. She's also a very strong feminist writer, and I encourage you to meet with her during the New Delhi World Book Fair. We have, in fact, two special focus. One is on children's books, and one is on graphic novels. Children's books because it's a very important segment of the literature market in India. So we are bringing some of our most famous children's books writers. One is Suzy Morgenstern. She's a star in France, and she will have workshops here with kids. It's going to be very exciting. And for graphic novels, we have a few writers as well. I'll just mention one, Simon Lamoureux. Simon Lamoureux has a strong connection with India. He lived in Bangalore for a couple of years, perhaps for 4 or 5 years. And he published 2 graphic novels, one whose title is Bangalore, the other one is Nalkada, and these 2 graphic novels encompass the atmosphere of this wonderful city of Bangalore. So we have writers, we also have publishers. A lot of French publishers are here to meet with their Indian counterparts. So we invite you all to go to the French pavilion. You'll see that Simon Lamoureux, this graphic novelist I was mentioning, was in charge of doing the design of the French pavilion. So it has been designed to resemble a French bookstore. You'll be surprised by what it looks like. The writers will have many roundtables, special events at the book fair. They will also give lectures and workshops in universities, bookstores, and other cultural institutions in New Delhi and in other cities in India. Just to mention 2 events. One is the special lecture by Nobel Prize Annie Ernaux at Sriram Center on Sunday at 6 p.m. And on Monday night at the Alliance Française, we will show a movie whose title is Happening. This movie is an adaptation of a novel by Annie Ernaux, and she will be there to answer a Q&A session after the screening. Just to finish, a few words about the place of French literature on the global book market. French is the second most translated language after English in the world, with nearly 17,000 books translated in 2021. And we at the French Embassy and at the French Institute in India, we are making a lot of efforts to increase the number of translations and publishing in India, and translations into Indian languages. We have a special program for that, and in the last years, we've published in Indian languages more than 40 books. So French literature is becoming more and more available in India, in English, but also in other Indian languages. Just to give you an idea also on the fact that the French readers are very open to foreign literature. I was mentioning that after the Paris Book Fair, the